Okay, we start. सर आप बोले थे क्वेश्चन बताएंगे सर 1 to 14. अच्छा हाँ. Yes, yes. Okay, so today we discuss the questions of exercise 1.4. Now you see, okay. देखो, let us see some questions. Suppose one question is x cube dx plus y cube dy is equal to 0. Okay. One question is that is x x cube dx plus y cube dy y cube dy is equal to 0 is equal to 0. Okay, so here you see what is the value of m. Your m is equal to x cube, and what is your n? Your n is equal to y cube. You have to find. Okay, what you have to find? You have to check this is exact or not. So you have to find del m by del y. So del m by del y will be 0. Okay, and similarly this del n by del x is also 0. So these two are same. Del m by del y is equal to del n by del x. Okay, so now if these two are same, so we can say this is exact. Okay, this is exact differential equation. Obviously exact, because from this you can see if you integrate both sides, what you get? This is integration of x cube dx, okay, plus integration of y cube dy is equal to c, is equal to c. Why? Because this is separate variable separable. The x term in one side, that is with okay, associated with the x, and y term associated with the dy. So okay, directly integrate it, nothing. Okay, this is x cube का integration क्या होगा? X to the power of 4 divided by 4 plus y cube का integration क्या होगा? This is y to the 4 to the power 4 is equal to c. Okay, so this is y to the power 4 plus x to the power 4 is equal to c1. So this is your solution. Okay, directly you can say. Why? Because this given equation is what? This is separable. Yes or no? So Yes, now, sir. Yes, sir. Yes, sir. so if you check exact or not, so it is exact. Okay, that is why you directly integrate it. Directly integrate it. Okay. So now this is your exact differential equation, and if it's exact, then if you follow the process, so what you get? This is integration of same. यहाँ पे आ जाएगा. Okay, integration of m dx plus integration of n dy. When you integrate with respect to dx, when you respect to x, then your y is a constant, and when you integrate n, that time only you take y term, that is y cube. Okay, so this will cut y4 to the plus x to the 4 is equal to c1. Yes or no? Yes, sir. Okay, then come to the next question. So x minus y whole into dx minus dy is equal to 0. The question is another question. This is x minus y whole into dx minus dy is equal to 0. Is equal to 0. Okay. So now you see this is what?
this is x minus y into dx minus x minus y into dy is equal to 0, is equal to 0. Okay, and this is also what, very simple integration. Okay, you directly do this. कैसे करोगे directly? Directly ये हो जाएगा your dy by dx, okay, is equal to 1. dy by dx is equal to 1. Okay, if you dy by dx is equal to 1, then what is dy? So dy is equal to dx. So now taking integration, your y is equal to x plus c. This is your solution. But you can say this y minus x is equal to c. This is your solution. Okay, so here is same. Okay, this x minus y into dx minus dy. Okay, let us find. So now here m is equal to, this is x minus y, and n is equal to, this is minus y minus x. Okay, so now your del m by del y is equal to minus 1, and del n by del x is equal to minus 1. So both are same. Both are same. So this is exact. This is exact. So now what is the solution? Your solution is integration of m dx plus integration of n dy is equal to some constant. And when you integrate m, here y is a constant. Okay, and this when you integrate m, this is free from x, free from x. So that implies it is x minus y integration dx plus this is integration n dy. तो n का वैल्यू क्या है, y minus x, तो you take only y. Okay, so y dy is equal to c. So that implies, तो यहाँ पे क्या होगा, this is x square by 2 minus yx plus y square by 2 is equal to c. So that implies this is how much, this is x square plus y square divided by 2 is minus yx is equal to c. And again if you simplify it, so what you get, this is x square minus 2yx plus y square is equal to 2c. And और भी सिंप्लीफाई करोगे तो x ये minus y का होल स्क्वायर is equal to suppose c. c1 So मान लेते हैं. this is your solution. X minus y square is equal to c1. Got it? Yes sir, yes sir. Okay, तो यहाँ पे डायरेक्टली करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे x minus y dx minus x minus y dy is equal to 0. तो यहाँ पे तुम्हारा dy by dx 1 आएगा, तो yes or no? Both side x minus y will be cancel out. Okay, so dx is equal to dy, so y is equal to x plus c, or y minus x is equal to c. So this solution and this solution both are same, yes or no? Here this is x minus y square. So if you write this is x minus y square or y minus x square, so this is what, this is another c square, and c square you can write c1, another constant. Okay, so both the solutions are same. Both the solutions are same. Got it? So in an exam, what will do? In exam, okay, in normally what happen, okay, in exam it is only asked solve this differential equation. Okay, it is not given it is homogeneous or separability or exact or linear. So whatever. we'll solve by normal method. Any method you can solve. Okay, Okay. any method you can solve. तुम्हारा देखो in 1.1 your separability, next is homogeneous, next is non-homogeneous, next is exact, then non-exact. Okay,
then linear differential equation. So this 4 to 5 types of differential equations methods are there. Okay, anyone you can apply. Okay, if it is mentioned, it will mention that you solve by this method, then you solve by this method. But in general, question asked only that solve this differential equation. So you can apply which one is suitable. Okay. Okay, let us see. So you do another question. Suppose e to the power y minus y into e to the power x. Another question, right? E to the power y minus y into e to the power x into dx. Okay, this is minus dx plus x into e to the power y plus x into e to the power y minus e to the power x dy is equal to 0. Is equal to, so here you see, if you see here, m is equal to how much? Here m is equal to e to the power y minus y e to the power x. Got it? Then here n is equal to, this is x into e to the power y minus e to the power x. So if you check this is exact or not, then you find del m by del y and del n by del x. Exactly, sir. Okay, तो del m by del y क्या होगा? E to the power y minus e to the power x. Okay, and here del n by del x is equal to e to the power y minus e to the power x. So both are same. Both are same. So this is exact. So now what is your solution? Your solution is integration of m dx plus integration of n dy is equal to c, and here y is a constant, and here this is free from x. So now if you write this integration of m dx, your m is equal to e to the power y minus y into e to the power x dx plus. So now in n you have to take only y term, so there is no term which is not associated with x. Okay, because two terms are there. In both the term, x is there. Yes or no? X into e to the power y, another one is e to the power minus x. In both the term, x is there. So there is no term in n which is free from x. Zero दे देंगे उसको. So now, so you integrate this. So what you get? This is e to the power y is a constant. Dx ka integration x minus y is a constant. E to the power x ka integration e to the power x is equal to c. So if you simplify, so okay, this is x to the power ey minus y e to the power x constant. So this is your solution. So this is your solution. Got it? थोड़ा सा ऊपर करना था. It's okay. Yes. Okay. सर जीरो क्यों है एक बार बता दीजिए तो फिर से. जीरो क्यों आएगा? तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ एन, दिस इज फ्री फ्रॉम एक्स. तो फ्री फ्रॉम एक्स में ये देखो यहाँ पे जो एन लिखा हूँ, दिस इज एक्स इंटू ई टू द पावर वाई माइनस ई टू द पावर एक्स. तो इन बोथ द टर्म एक्स इज देयर. ओके. ओके सर. That is why it will be zero. And there is no term. Okay. So next you write another question. Okay. X to the power 4 plus y square, x to the power 4 plus y square
into dx, x to the power 4 plus y square into dx minus xy dy minus xy dy is equal to 0 with initial condition y2 is equal to 1, with initial condition y2 is equal to 1. Okay, so now let us see this is initial value problem, initial condition given. So let us see. So here m is equal to, this is x to the power 4 plus y square, and n is equal to, this is minus xy. So when you find the derivative with respect to y, that is del m by del y, so what happened? This x4 का derivative 0 होगा and y square का derivative क्या होगा? 2y, because x is a constant here. And similarly, when you find del n by del x, so this is what? This is only minus y. And now these two are not equal. Del m by del y not equal to del n by del x. So we can say this is not exact. Okay, not exact. So we have to find the integrating factor. So we first follow the two formula, that is divided by m and divided by n. That's two formula. First we follow. If it is not possible, then we follow other some formula. Okay, let us see. So del m by del y minus del n by del x. We have to find integrating factor, and which is equal to, this is del m by del y is equal to 2y, and del n by del x is equal to minus y. This is plus y, which is equal to 3y. This is correct. So what we have to divide? Okay, so you divide m or n. If you divide m, then x to the power 4 plus y square, then nothing will be there. Yes or no? Because if you divide m, then the function will be, result will be function of y only, but it will be not. Yes or no? So you have to divide n. Okay, because n is equal to minus xy. Okay, if you divide n, then this is minus xy, and y cancel out. This is minus 3yx. And this is only function of x. Got it? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now what is your integrating factor? So your integrating factor is equal to exponential integration of minus 3yx dx, and which is equal to, this is e to the power minus 3 ln x, and which is nothing but x to the power minus 3, x to the power minus 3. So this is your integrating factor. So now you multiply integrating factor. Multiply integrating factor, that is x to the power minus q, both sides of differential equation. So what you get? Your x to the power 4 plus y square. This is x to the power minus 3. X to the power 4 plus y square into dx minus x to the power minus 3 into xy dy is equal to 0. Okay? Yes or no? So now, if you simplify this, so what you get? This is x plus x to the power minus 3 into y square into dx. This is minus x to the power minus 2 into y dy is equal to 0. So here, now this is exact. So you can check also. This m star is equal to x plus x to the power minus 3 y square, and n star is equal to, this is minus x to the power minus 2 into y. So again you have to check this del m star divided by del y. Okay, so what you get? So y में differentiate करोगे, so x is constant and derivative of x is equal to 0, and in the second term you can take x to the power minus 3 outside, and y square का derivative क्या होगा? 2y.
Okay, and similarly when you find the derivative of n star with respect to x, so here minus y is a constant, taking outside x to the power minus 2 का derivative क्या होगा? This is minus 2 into x to the power minus 3. Is it correct? So now you see, so both are same, because this is equal to, this is 2 x to the power minus 3 into y, this is also 2 x to the power minus 3 into y, and both are same, okay. So you can say this del m star by del y is same as del n star by del x, so exact. Okay, so now what is the solution? Your solution will be integration of m star dx plus integration of n star dy, and here this is y is a constant, and here this is free from x is equal to constant. So now that implies, तो m star का क्या होगा? m star का वैल्यू क्या है? x plus x to the power minus 3 y square, x plus x to the power minus 3 into y square into dx plus n star क्या है? minus x to the power minus 2y, so there is no term, so this will be 0, this is not free from x, okay, which is equal to c. So now you integrate it. So this is x का integration क्या होगा? x square by 2 plus y square is a constant, taking outside x to the power minus 3 का integration क्या होगा? x to the power minus 2 divided by minus 2, okay, is equal to c. So now you simplify it. तो सिंप्लीफाई करने से क्या होगा? दिस x square by 2 plus this is minus 1 by 2 y square by x square is equal to c. Okay, 1 minus 1 by 2 y square by x square is equal to c. And if you want to simplify, you can simplify more. Okay, is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay, और भी सिंप्लीफाई हो सकता है. इफ यू टेकिंग 2 कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा x to the power 4 minus y square is equal to, this is 2cx square. ओके, एंड और भी थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो इतना ही लिखो. ओके, और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, दिस इज योर सॉल्यूशन. ओके, और भी सिंप्लीफाई करोगे तो y टर्म में लिख सकते हो, दैट इज योर y square is equal to x to the power 4 minus 2cx square. Okay, and you can write y, that is expression form में लिख सकते हो, this is plus minus root over of x to the power 4 minus 2cx square. Okay, so you can write this is the solution. Okay, anyone you can write. Understood? Any doubt? सर सर एग्जाम में सॉल्यूशन जो लिखेंगे सर जरूरी है कि एक्सप्लिसिटली लिखें, इम्प्लिसिटली लिख सकते हैं सर? Yes, yes, no problem. You can write, but you have to always write in a simplified form. Okay. हाँ सर. एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो. तुम और भी सिंप्लीफाई करने से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यू हैव टू राइट इन सिंप्लीफाइड फॉर्म. ओके. यस सर. Sir, sir, why do we need to check the exactness of the expression after multiplying the integrating factor to the expression? Okay, no need to again check, but I check this because your integrating factor is correct or not. Okay, sir. Okay, if you are if it is correct, then no problem. Okay. Sir, is there any scenario where it is not exact after multiplying the integrating factor? No. After multiplying the integrating factor, it will be exact. Okay. But Okay, sir. I check maybe integrating factor, maybe some calculation will be wrong. Okay. So that is why I check. But you may or may not check. No problem. After multiplying integrating factor. Okay, sir. Yes, sir. Thank you.
तो नेक्स्ट अच्छा और एक क्वेश्चन लिखो, इसमें था ना क्या इनिशियल कंडीशन एक था या अच्छा y2 इज इक्वल टू 1 इनिशियल कंडीशन था, तो पुट करो y2 इज इक्वल टू 1, y2 इज इक्वल टू 1 तो मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। ओके, इधर से पुट करो, ठीक है। सपोज y2 इज इक्वल टू 1, तो y2 इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, तो नाउ दिस इज x इज इक्वल टू 2, दैट इज 2 टू द पावर 4 minus 1 square is equal to 2 into c into 2 square. Okay, so that implies 2 to the power 4, this is 16 minus 1 is equal to, this is 2 into 4, that is 8c. So here c is equal to 15 by 8. Okay, c is equal to 15 by 8. Okay, so here you can find the particular solution. Your particular solution is what, x to the power 4 minus y square is equal to, this is 2 into 15 by 2, 2 into 15 by 8, the 15 by 4 into x square. Okay, so this is your particular solution. Got it? Yes, sir. Hmm. Okay, so come to the another question. चलो ये वाला करेंगे, cos ओमेगा x प्लस cos ओमेगा x प्लस ओमेगा इंटू साइन ओमेगा x, cos ओमेगा x प्लस ओमेगा इंटू साइन ओमेगा x इंटू dx प्लस e to the power x into dy plus e to the power x into dy is equal to 0. Okay, and the initial condition given y0 is equal to 1. Initial condition given y0 is equal to 1. So now let us find. So here this is m is equal to cos omega x plus omega sin omega x. तो तुम्हारा del m by del y क्या होगा, this will be 0. Yes or no? Cos omega x plus omega sin omega x. Okay, and here n is equal to e to the power x, so this is del n by del x क्या होगा, e to the power x. Okay, so these two are not equal, that is this is del m by del y, okay, not equal to this is del n by del x. Got it? Del m by del y not equal to del m by del n by del x. And this is not exact. So now you subtract del m by del y minus del n by del x is equal to 0 minus e to the power x, that is minus e to the power x. तो इसमें बेटर होगा n डिवाइड करो, बिकॉज 0 तो m तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, बिकॉज cos ओमेगा x ओमेगा sin x ये डिवाइड करोगे तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो यू डिवाइड n एंड n इज इक्वल टू e टू द पावर x. ओके, तो डिवाइड करोगे तो क्या रहेगा, -1 एंड any constant will be there, then you can treat as it is function of x or it is function of y. Okay, you can treat. So now this n में डिवाइड हुआ है तो -1 आया है, तो व्हाट इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 dx and which is equal to e to the power minus. Okay, so now you multiply integrating factor. So if you multiply integrating factor, e to the power minus x both side of
differential equation. So what you get? E to the power minus x into, this is cos omega x plus omega sin x, cos omega x plus omega sin omega x plus dy is equal to 0. Why? Because e to the power minus x मल्टीप्लाई होगा तो e to the power minus x into e to the power plus x 1 हो जाएगा, तो इसलिए plus dy is equal to 0. Okay, so now this is exact. Okay, you can check. सर dx छूट गया वहाँ पे सर, what यहाँ पे dx छूट गया, e to the power yeah. So now you can easily check it. Okay, because if you see del m by del y not equal to del n by del x which is equal to 0. Okay, ये सेम हो जाएगा तो एग्जैक्ट हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे तुम चेक करोगे तो ये आ जाएगा del m by del y और del m star by del y is equal to del n star by del x which is equal to 0, तो वो दोनों सेम है. तो नाउ इट इज एग्जैक्ट. तो एग्जैक्ट हो जाएगा तो सॉल्यूशन क्या होगा? योर सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन ऑफ m star dx where y is a constant plus n star dy which is free from x is equal to c. तो यहाँ पे you write this integration of m star dx, that is e to the power minus x whole into cos omega x plus omega sin omega x dx plus integration of dy is equal to c. because यहाँ पे n star क्या है? your n star is equal to 1. Yes or no? Your n star is equal to 1. So if it is constant, then you can treat it as either function of x or function of y. So we can take function of y because we need that. Okay, so that is integration of dy is equal to c. So now you integrate it. Okay, तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e to the power minus x cos omega x plus omega into sin omega x dx. Okay, you can integrate it, no problem. Okay, but it will take more time. Okay, so but you can find it. हो पाएगा तो सर हो जाएगा, बट बहुत लंबा है सर, आइए। करना पड़ेगा हर एक चीज को इंटीग्रेट. थोड़ा लेंदी होगा बट हो जाएगा. हाँ सर. Okay, so you can easily find it, no problem. You can easily find it. तो सी फिर निकल जाएगा. So y is equal to, you can find this is integration of this into dx plus c. Okay, you can easily find this. Okay, the solution. Okay, you can easily find this. तो यहाँ पे देखो. ओके, तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो. ओके, बिकॉज इट इज सेपरेबल. यस और नो? ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज सेपरेबल. यस और नो? इफ यू राइट दिस, यस सर. ओके, इफ यू राइट दिस तो क्या होगा? तुम्हारा dy इज इक्वल टू ये आ जाएगा cos ओमेगा x प्लस ओमेगा sin ओमेगा x डिवाइड बाय e टू द पावर x. ओके, एक माइनस आ जाएगा. सर ओके, यस सर, जब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर में जो पूरा e टू द पावर -1 dx लिए थे, सर उसको y के तरफ से करते तो इजी होता था, मेरे को लग रहा है. किसमें? y के टर्म्स में करता है सर उसको. तो कैसे y के टर्म में करोगे? बोलो. सर इसको e टू द पावर -1 into dy कर सकते हैं, ऊपर में कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 dy. इंटीग्रेशन ऑफ -1 dy e टू द यहाँ पावर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर में. यस सर, तो फिर वहां से करते ना, फिर तो मेरे को लगता है यहाँ पे n में इजी होता. नो नो नो, दोनों मेथड से होता है ना. दोनों लेते हैं तो x dx लेते हैं. देखो तुम यहाँ पे n डिवाइड करोगे तो ये फंक्शन ऑफ x आएगा, तो तुमको इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x में करना पड़ेगा. एंड यहाँ पे m डिवाइड करोगे तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ y आएगा, बट यहाँ पे m डिवाइड करोगे तो y फंक्शन नहीं आएगा. कटेगा नहीं सर. इसीलिए हम n डिवाइड करोगे इंटीग्रेशन पे विथ रेस्पेक्ट टू x नहीं करेंगे. ठीक है, लिखने में आ रहा है सर.
देखो तुम्हारा सेपरेबल ओडी में डायरेक्ट करोगे तो ए सेम इंटीग्रेशन तो आ रहा है, ये सर हाँ नो सर, यस सर, यस सर। सेम इंटीग्रेशन तो आ रहा है, लेंदी होगा बट यू कैन डू इट। हाँ सर। ओके, आई होप ये देखो ये जो इंटीग्रेशन करोगे e टू द पावर माइनस एक्स कॉस ओमेगा एक्स एंड ओमेगा इनटू साइन ओमेगा एक्स, तो 2 टाइम्स उसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके, उसके हाँ बाद सेम टर्म आएगा, सेम ठीक टर्म है, आएगा, फिर कट जाएगा वहां पे, कटेगा कटेगा फिर। हो जाएगा, हो जाएगा। ओके ठीक है, ये वाला तुम करोगे। लेट अस सी, और अच्छा और एक प्रॉब्लम है, और कुछ प्रॉब्लम तुम पूछो, कुछ प्रॉब्लम है तो बुक पे। नहीं तो यहाँ पे प्रॉब्लम देखो, e टू द पावर माइनस वाई डी एक्स, e टू द पावर माइनस, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको कर देता हूँ। सर एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा सर, वो सर आप लोग अलग से बनाएंगे कि सर बुक से क्वेश्चन आएगा? देखो क्वेश्चन जो आता है मैथमेटिक्स में, यस सर। तुम्हारा सिलेबस से आएगा, उसका मतलब ये नहीं कि पूरा बुक से आएगा। मतलब बुक से जो सपोज यहाँ पे e टू द पावर माइनस है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज होके आएगा, मतलब सेम क्वेश्चन सिमिलर टाइप क्वेश्चन आएगा बट फंक्शन चेंज होगा। अच्छा, ओके, तो आप लोग बना क्वेश्चन दे सकते हैं? हाँ मेथड सेम रहेगा। अच्छा सर। e टू द पावर okay, e to the minus s whole into it minus e to the minus y plus 1 into dy is equal to 0, is equal to 0। ओके, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक f गिवन है, दिस f is the factor, factor means is integrating factor, it is given in the book, okay, book question, but in exam it is not given, you can do, okay, using your methods। Okay, so see this f is given, we want to find integrating factor, is it possible or not? Okay, so let us see, here you can see here m is equal to e to the power minus y and n is equal to, this is e to the power minus x whole into, this is minus e to the power minus y plus 1। So now you can see what is del m by del y, your del m by del y is equal to minus e to the power minus y, and your del n by del x is equal to what, this is minus e to the power minus x whole into minus e to the power minus y plus 1। Is it correct? Because the second term bracket term is a constant, so e to the power minus s का डेरिवेटिव होगा minus e to the power minus x। So now these two are not equal, this is del m by del y not equal to del n by del x, so this is not exact, this is not exact। So let us find the integrating factor, so this is del m by del y minus del n by del x, तो क्या होगा, this is minus e to the power minus y minus minus plus e to the power minus x whole into minus e to the power minus y plus 1। ओके, तो यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, एनीथिंग? नहीं सर। अच्छा, तो कैंसिल यहाँ पे तो नहीं होगा, लेकिन डिवाइड करके देख सकते हैं। ओके, तो अभी तुम उसको a में और n में डिवाइड करोगे तो फंक्शन आपको आएगा, कुछ फंक्शन आएगा, सपोज यू डिवाइड बाय m, ओके, n में डिवाइड करोगे तो यहाँ पे n क्या होगा, n इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर माइनस x होल इनटू, दिस इज माइनस e टू द पावर माइनस y प्लस 1। तो कुछ कैंसिल होगा, फंक्शन ऑफ x आएगा, फंक्शन ऑफ x आएगा, and again you divide by n or you can divide by m, a में डिवाइड कर सकते हैं, तो a में डिवाइड करने से क्या होगा, e टू द पावर माइनस y प्लस e टू द पावर माइनस x होल इनटू this divided by m, and your m is equal to e to the power minus y।
एंड ये फंक्शन ऑफ y होना चाहिए। देखो, इज इट पॉसिबल? ये दोनों होगा? No, sir. नो सर, नो सर, नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ओके, ये फंक्शन ऑफ x नहीं आएगा, n में डिवाइड करने से, m में डिवाइड करने से फंक्शन ऑफ y नहीं आएगा। ओके, तो दो मेथड काम नहीं करा। बाकी दो मेथड है। बाकी दो मेथड क्या है? एक होमोजेनियस होना चाहिए, ओके, बट ये तो होमोजेनियस नहीं है, यस और नो। और एक क्या होगा? x dy y dx फॉर्म में रहना चाहिए, समथिंग इनटू बाय m से तुम y कॉमन ले सकते हो और n से x कॉमन ले सकते हो, पर ये भी तो नहीं होगा। तो वो दो मेथड भी काम नहीं है। तो तुम्हारा जो चार मेथड है, वो चार मेथड कुछ से भी किसी भी मेथड से भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं आएगा, यस और नो। Yes. Yes, sir. ओके, तो व्हाट वी हैव टू डू? ओके, तो इसीलिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक फंक्शन गिवन है। तो यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड इंस्पेक्शन, ओके, we can find integrating factor, that is e to the power x plus y. Okay, so how it is e to the power x plus y? So better you do one thing, यहाँ पे जो e to the power minus y dx, e to the power minus x, तो एक काम करो, टेकिंग पॉजिटिव, ओके, तो जो e का पावर है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसका पावर सब पॉजिटिव ले जाओ। पॉजिटिव मतलब क्या करोगे? उसको e to the power minus y मीन्स दिस इज 1 by e to the power plus y, यस और नो। ऐसे करके दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो। ओके, सपोज ये वाला गिवन नहीं है तो क्या करना पड़ेगा भाई? इंस्पेक्शन यू हैव टू डू, यस और नो। यहाँ पे गिवन है तो यू कैन मल्टीप्लाई, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, ना इफ यू डू लाइक दिस, यू कैन सी, देखो, सपोज योर क्वेश्चन इज e to the power minus y into dx, okay, plus e to the power minus x into minus e to the power minus y plus 1 dy is equal to 0। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दिस इज dx by e to the power plus y plus e to the power x, यहाँ पे हो जाएगा minus 1 e to the power y plus 1 into dy is equal to 0। Now I am taking LCM, तो मेरा LCM क्या होगा? e to the power x into e to the power y, तो यहाँ पे मेरा होगा e to the power x into dx प्लस यहाँ पे क्या होगा? e to the power x into e to the power y, यहाँ पे माइनस 1, यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे क्या होगा? e to the power y dy is equal to 0। It is correct? हाँ सर, ठीक है सर। So that implies, so this is e to the power x dx plus e to the power y minus 1 into dy is equal to 0. Why? Because e to the power x, okay, x into e to the power y, this is not equal to 0, so I can multiply in the right hand side. Okay, this is equal to 0. So now this is the exact differential equation. How? Here m is equal to e to the power x, n is equal to e to the power y minus ये 1. तो सेपरेबल से भी कर सकते, हाँ, सेपरेबल से भी होगा हो सर, जाता। बोलो क्या हुआ, क्या हुआ, बोलो। सेपरेबल से ही वाला हो जाएगा ना सर? अभी किसमें किसमें? जो बॉक्स में लिखे हैं सर, उसके बाद हाँ, इधर डायरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज दिस इज सेपरेबल ओनली। वही पूछ Okay. रहे थे सर। हाँ, you can do it, but if you check exact or not, you can see this is exact. Yes or no? हाँ सर, Del m by del y is equal to del m by del x. It is exact. Okay, but यहाँ पे it is given in the book, book में given है, but एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, okay, ये given नहीं होगा, but जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो we can find integrating factor by using these 4 methods. Okay, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा इंटीग्रेटिंग, ऐसा कुछ नहीं आएगा। ओके, जो भी प्रॉब्लम आएगा एग्जाम में, तो यू कैन फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूजिंग दिस 4 मेथड्स।
Got it? हाँ सर Okay. Yes, sir. So this is the question. Okay, तुम पूछो और कुछ डाउट है तो बुक एक्सरसाइज में देखो. अभी तक पूरा बनाया नहीं है सर, तो अभी तक डाउट निकला नहीं है उसमें। ओके, तो देखो और भी थोड़ा देखो, कुछ होगा तो पूछो, और भी है 5-7 मिनट. ओके. हाँ हेलो. अरे डिनर ना रखी होती डिनर होती. ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେ ଘରଠି ହଉଛି. ସେ ଘରଠି ହଉଛି ତ. ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି. ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଁ ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର ନୁହଁ. ମୁଁ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଦିନରେ କି ରାତି ମୋର ଭୁଲି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି ମୁଁ ଦିନରେ କି ରାତି. ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା, ନା ନା ପାଇବି ଯେ, ମୁଁ ଦିନ କି ରାତି ସେଇଟା ଡାଉଟ୍ ରେ ଥିଲି. ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି. ହୁଁ. ओके, sorry. Okay, any doubt? हाँ सर Okay, so this math one is very easy because these differential equations, the process or method, the problems, these are very easy. Okay, ठीक है, you practice it. Okay. यस फॉर अटेंडेंस सर. Attendance. Okay, 1 minute. सैप पोर्टल तो अपडेट हो गया ना सैप पोर्टल. So you write your roll number in the chat box. ओके सर. Sir, Yes. सर मेरा वो नाम का जो प्रॉब्लम था ना, वो SAP में भी रंजन रंजन आ रहा है. अच्छा, सॉल्व नहीं हुआ है. थोड़ा वेट करो. मैं देख लेता. 1 मिनट, थोड़ा वेट करो. देख, नहीं होगा तो तुम मेल किए थे. नहीं आपने बोला ना मैं देख लूंगा बोल के. अच्छा, 1 मिनट. Can we leave now, sir? यस. Thank you, sir. अच्छा, तुम्हारा क्या रोल नंबर था? 768. यस सर. अच्छा, 1. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो. सर मेरा रोल नंबर 772 है सर. एसएपी पोर्टल में